Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all doing well and ready to learn. Today's session outline is based on nursing care plan and activity I have planned for your practice. The earliest origin of nursing care plan proposed by Ellen and Buell, a public health nurse and nursing instructor at Syracuse University in the 1930s and 40s. First of all, we are going to discuss about the nursing care plan. Nursing care plan is the written manifestation of the nursing process. Care plans play a vital role in the treatment of patient. It clearly defines guidelines along with the nurse's role in patient care and help them to create and achieve solid plan of action. This occupies nurses to provide focused care without overlooking important steps of nursing care plan, such as assessment, nursing diagnosis, planning, implementation or nursing intervention, and evaluation. Hence, nurses are using both terms interchangeably. In other words, we can say that formal guideline for directing nursing staff to provide client care is a nursing care plan. The purpose of nursing care plan is to identify problems of patient and find solution of those problems effectively in a better way. What is the nursing process? Nursing process involves critical thinking plus scientific method. What is the critical thinking? Critical thinking is the steps in which we ask question ourselves. हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होते हैं और क्रिटिकली किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग. एंड व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? Scientific method is based on cycling process that involves observation or questions, what we observe from the environment, what we observe into the patient, and then we make the रिसर्च टॉपिक एरिया. यानी कि हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या फाइंडिंग चाहिए, इसके लिटरेचर क्या बोल रहा है, वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद फिर हम एक स्टेटमेंट अपनी बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे. उसके लिए हम डिफरेंट आर्टिकल सर्च करते हैं, डिफरेंट लिटरेचर सर्च करते हैं जो प्रीवियसली उस पर काम हो चुका होता है. वो सारी चीज़ें हम जो है वो इज एक्सपेरिमेंट ले रहे होते हैं और उसी को बेस बना के फिर हम उस डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं. एनालाइज किस बेस पे करते हैं कि जो हमने एक स्टेटमेंट यानी कि हाइपोथेसिस बनाया जो कि हमें पेशेंट में प्रॉब्लम नजर आया, फिर वो जो हमने लिटरेचर सर्च किया उसके साथ हम उसको एनालाइज करके देख रहे होते हैं कि कितना मैच हो रहा है. और जो हमने पेशेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं या उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस लिटरेचर में या हमारे जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है. इसलिए हम ये कर रहे होते हैं ताकि हमें ये मेक श्योर हो जाए कि हमने जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है वो वाकई एक रियलिटी बेस है या जस्ट हमारी एक थिंकिंग है. उसके बाद फिर हम कंक्लूड कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया था उसके ये फैक्ट्स हैं, ये साइंटिफिक एविडेंस है. इस तरीके से हमारी एक साइंटिफिक मेथड की साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है. अगर हमने कंक्लूजन सही नहीं बनाया या स्टेप्स हमने ये सही फॉलो नहीं किए तो फिर हम जो है वो दोबारा से ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. यानी कि दोबारा हम पेशेंट की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं. तो नर्सिंग प्रोसेस में भी नर्सिंग केयर प्लान जब हम बनाते हैं तो ये पूरा साइकिल जो है वो हम फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल थिंकिंग होती है. क्रिटिकल थिंकिंग के बाद जो है फिर हम साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम है क्या. स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग केयर प्लान.
There are 5 steps usually nurses are used during the nursing care plan. First is assessment, second is nursing diagnosis, third is planning, fourth is implementation or nursing intervention, and fifth is evaluation. According to the UK nurse Helen Belanti, care plan are a critical aspect of nursing and they are meant to allow standardized evidence-based holistic care. She emphasized that component rational, nursing rational is necessary in during the implementation of nursing intervention that is used when nurses are doing planning of nursing care or intervention or implementation phase. Mostly, it is not written in the nursing care plan or nursing process. Nurses just write 5 components in nursing care plan, but in the behind scene, nurses must aware the rationale of the nursing intervention, why they are providing specific care to the particular patient, what is the benefit of nursing care to the patient. This insights creates rational thinking of the nurses. The first step of nursing plan is assessment, in which nurses assess systematic and collect data continuously. The assessment phase is a critical component of nursing process. Information gathered in this phase is used to establish a foundation upon which all patient care moving forward is established. Nurse should assess patient from head to toe in order to know the actual and potential problem of the patient. If nurses are competent to assess patient, it is sure that he or she is able to make nursing diagnose in a right way. Assessment is a pillar of nursing care plan and nursing students are mostly ignored this part. It is recommended that nurses must spend maximum time to explore patients' clinical and non-clinical issues. Second step of nursing plan is nursing diagnosis. A nursing diagnosis is a clinical judgment that concerns to a human response to the health conditions or life processes or vulnerability of the patient by an individual, family, group, or community. It is actually a statement of the client's actual or potential problem. पेशेंट का या तो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है कोई जो कि वो खुद वर्बलाइज कर रहा होता है कि उसको फीवर हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, उसको डिजीनेस फील हो रही है, वो उसका एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसको हम क्लिनिकल जजमेंट भी कहते हैं। इसके बेस पे हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं जो कि बहुत इजी होती है। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वो किसी भी एक्चुअल प्रॉब्लम या एक्चुअल जो साइन सिम्टम होते हैं पेशेंट के उसके बेस पे हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है या उसी के मुताबिक हम पेशेंट के लिए बोल सकते हैं कि पेशेंट को इस साइन सिम्टम की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जो कि खुद वर्बलाइज कर रहा है कि उसको पेन है या उसको फीवर हो रहा है, ठीक है, तो पेन जो है वो बहुत सारे कॉजेज की वजह से हो सकता है। जैसे अगर उसको कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से उसको पेन हो सकता है, ठीक है। अगर वो कार्डियक पेन की बात कर रहा है तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा, पोटेंशियल कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की हम बात करते हैं उसकी वजह से जो उसको पेन हो रहा है। तो ये 2 एरियाज हैं जिसको हम मद्देनजर रखते हुए अपनी नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं और उसी के मुताबिक फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट को दे रहे होते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग प्रोसेस involve nursing planning. Nurses are accountable to make planning according to the actual and potential problems of the patient. That means that by considering nursing diagnose, not medical diagnose. इसमें मोस्टली नर्सिंग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं
और वो मेडिकल डायग्नोस पे अपनी नर्सिंग डायग्नोस बना रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। तो नर्सिंग डायग्नोस जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट की जो क्लिनिकल जजमेंट होती है उसी के मुताबिक हमने नर्सिंग डायग्नोस बनाना होता है, नहीं कि मेडिकल डायग्नोस के मुताबिक। तो प्लानिंग फेज में नर्सिस 2 स्टेप्स परफॉर्म कर रही होती हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल बनाती हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाती हैं। शॉर्ट टर्म गोल में ऐसे गोल्स पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं जिसमें हम पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसी देते हैं जिसमें हमारा गोल 6 आवर्स या 8 आवर्स की जो शिफ्ट है उस पर कंप्लीट हो जाए। और लॉन्ग टर्म गोल ऐसे गोल बनाए जाते हैं, ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान की जाती हैं जो कि 1 वीक के लिए होती है या 1 मंथ के लिए होती हैं या मोर देन 6 मंथ्स के लिए बनाई जाती हैं, ताकि जो पेशेंट की जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर पाए, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। Fourth step of nursing care plan or nursing process involves nursing intervention. It is giving of actual nursing care to the patient. For example, help the patient in movement, giving mouth care, help patient to express fears and anxiety. Nurses are responsible to give nursing intervention according to nursing diagnosis of the patient. Fifth phase of nursing care plan or nursing process is evaluation. It is the measurement of the effectiveness of nursing intervention which we have provided to the patient. During the evaluation phase, nurses need to know either short-term and long-term goals achieved or not. For that, nurses do observations, assessment, and asking questions from the patient about their issues, about their problems. If the patient is unconscious, nurses rely on observation and assessment skills. Particularly emphasize is on the short-term goal. At the end, nurses concluded in this phase that short-term goal achieved after giving nursing care and nursing intervention within 6 hours or 8 hours of the shift. For long-term goals, nurses may concluded that long-term goal would be fulfilled within 1 week or during hospitalization. It again depends on long-term goal. For example, if the patient has chronic problem like restricted activity due to stroke, it needs continuous physiotherapy, and for improvement, it needs 1 week or more than. In case short-term goal not obtained within time period, nurses must do revise 5 phases of nursing care plan, like she needs to again assess patient, make nursing diagnose, make planning, do nursing intervention and evaluation. These are references. Dear students, I hope you enjoyed session and got understanding of basic concepts of nursing care plan and its components. Dear students, follow another lecture for practice activity.